lecturers. Good morning. This is NJ. Welcome to English speaking class, guys and girls. My students, Assalamu alaikum, Marhaban, Sabal Khair, Dajahao, Privet, Jiyanu. Dear students, today we are going to view the change of voice of past tense. Simple past tense, change of voice has a great importance in speaking. Let's see the sentences of past indefinite in voice. Active voice and passive voice. Let's start up here. आइए यहाँ पे अपने सबक का आगाज करते हैं। अजीज़म तुलबा, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी में वॉइस के जुमलों को देखते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस के जुमलों को आज हम व्यू करेंगे और उनके कंपोज करने के तरीके को, चेंजेस को देखेंगे और इन्हें बोलने की भरपूर प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स रीड आउट द फर्स्ट वन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिड हैरी ट्राई ऑन न्यू कैप। 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 इंटरोगेटिव साइन। दिस इज an interrogative sentence, past tense, simple past tense. Did Harry try on new cap? क्या हैरी ने नई कैप पहनकर देखी? क्या हैरी ने नई कैप पहनकर देखी? Did Harry try on new cap? क्या हैरी ने नई टोपी पहनकर देखी? Let's see its change in passive voice. You see, my students, as you know that in passive the subject Harry and the cap, the new cap, will replace each other in passive. Here say in passive, was new cap tried on by Harry. Was new cap tried on by Harry. You see, my students, new cap stands here as a subject, and in all passive we use the third form of verb by the rules. रूल्स क्वाइट के मुताबिक हम जो हैं पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई ट्राइड इज हियर एंड ट्राई ऑन इज अ फ्रेजल वर्ब एंड ट्राइड ऑन बाय इज अ connecting preposition and Harry will be here as an object. So new cap and Harry replace each other in passive. Their changes, they change their positions. So was new cap tried on by Harry? Interrogative sign. Was new cap tried on by Harry? क्या नई टोपी कैप हैरी से पहनकर देखी गई? क्या नई कैप हैरी से पहनकर देखी गई? Was new cap tried on by Harry? Was new cap tried on by Harry? क्या नई टोपी हैरी से पहनकर देखी गई? Interrogative sign and past indefinite. ये simple past tense है। Let's see the next statement. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। Next one is did the crew get the rewards? Did the crew get the rewards? Interrogative sign. Did the crew get the rewards? Did the crew get the rewards? क्या जहाज के अमले ने इनामात हासिल किए? This is also past tense. You know, in past tense we start did for the interrogatives in the stat. So अगले जुमलों में हम past इंडेफिनिट टेंस में फेल माजी में जुमले के शुरू में डिड लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। द क्रू इज द सब्जेक्ट। क्रू जहाज के अमले को कहा जाता है। क्रू इज द मेंबर्स ऑफ द एयरप्लेन। सो क्रू जहाज के अमले को कहा जाता है। गेट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। द रिवार्ड्स इज एन ऑब्जेक्ट। सो डिड द क्रू गेट द रिवार्ड्स? डिड द क्रू गेट द रिवार्ड्स? इंटरोगेटिव साइन। क्या जहाज के अमले ने इनामात हासिल कर लिए? क्या जहाज के अमले ने इनामात ले लिए? Did the crew get the rewards? Did the crew get the rewards? Interrogative sign. क्या जहाज के अमले ने इनामात हासिल कर लिए? Let's see the exchange. Excuse me. आइए इसकी चेंज देखते हैं। पैसिव, you see, rewards. Rewards is a here you see the rewards is an object. So in passive it will come up here as a subject. So where the rewards got by the crew. Where the rewards got by the crew. Where the rewards क्या इनामात जहाज के अमले से हासिल किए गए? You see, my students, where is in a start because it's a questionary statement and rewards
The rewards is a plural noun. With plural nouns we write where, and with singular nouns we add whereas. So where is here and where is in the stat. वर्ग को आगाज में लिखा गया है क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है और इसे सवालिया ही रहना है, तो पैसिव में हम वाज वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, जैसे कि आपने देखा कैप सिंगुलर था तो वाज द कैप, और यहाँ पे रिवार्ड्स इज अ प्लूरल नाउन, सो यहाँ पे वर इस्तेमाल किया जाएगा। वेयर द रिवार्ड्स गॉट बाय द क्रू, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट है, गेट गॉट। So where the rewards got by the crew. By is a connecting preposition. The crew is an object in passive because when we change the active voice statement to passive, the subject and the object replace each other. They change their position. So where the rewards got by the crew. Interrogative sign. क्या इनामत rewards got by the crew. Where the rewards got by the crew. Interrogative sign. Where the rewards got by the crew. You see, where is in the start because it's a questionary statement. The rewards is the subject, and got is a third form of get. By is a connecting word. The crew is an object here. So after making changes, we have new sentence or formation. By rewards got by the crew. By rewards got by the crew. क्या इनामात क्रू से हासिल किए गए? क्या इनामात हवाई जहाज के हमले से हासिल किए गए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आइए सबसे पहले अगला स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज डिड मैक पे द हैवी फाइन। डिड मैक पे द हैवी फाइन। डिड मैक पे द हैवी फाइन। इंटरोगेटिव साइन। डिड मैक पे द हैवी फाइन। Did Mac pay the heavy fine? Interrogative sign. Did Mac pay the heavy fine? क्या मार्क ने भारी जुर्माना अदा किया? Did Mac pay the heavy fine? क्या मार्क ने भारी जुर्माना अदा किया? You see my students, this is the past indefinite and did is in the start because in interrogative sentences we write did in the start. Mac is a subject here and heavy fine, the heavy fine is the object. So while making changes to passive, the heavy fine will come up here as a subject. Was the heavy fine paid by Mac? Was the heavy fine paid by Mac? Interrogative sign. क्या भारी जुर्माना मार्क से अदा किया गया? Was the heavy fine paid by Mac? Was the heavy fine paid by Mac? Interrogative sign. क्या भारी जुर्माना मार्क से अदा किया गया? You see my students, Mark in active statement, Mark is a subject and the heavy fine is an object. When we change it to passive voice, this subject and object replace each other, they change their positions, and you see here the heavy fine is here as a subject and Mark is here as an object, and we have a new statement. जुमला देखिए, was the heavy fine paid by Mark? Was the heavy fine paid by Mark? क्या भारी जुर्माना मार्क से अदा किया गया? Here my students, we have discussed the past indefinite tense and its voice, active voice phrases and passive voice sentences, and by applying the rules हमने वायद को अप्लाई करते हुए make the changes, हमने तब्दीलियाँ की और we made the practice with these active and passive statements और हमने इन जुमलों को बोलने की मशक भी की। I hope you will remember this past indefinite and their voice, change of voice from active to passive. I wish you all the best. I'll see you again. Goodbye.